Hi, Sahil. We are the only one, and the first and second. Hello, sir. Rohan here. Sahil will be joining. Yes. Yeah, hi, Rohan. How are you, sir? All good? I'm fine. All good. Students have not joined. Sir, like I've not admitted them yet. The main thing is, I'll admit them together. Okay, okay, okay. Good evening, Sahil. Can you hear me?
Yes, sir. Sahil sir, can you hear me? Sahil sir, can you hear me? Sir, just a sec. He's having some problems Okay, with okay, mic. okay. 2 minutes. Sahil, did you make it to the classroom? Sahil sir? All the students just wait for a minute or two. Sahil sir will be joining in a moment. He's having some issue with the mic. We'll start in 2 minutes. Yes, sir, he is joined. Just a sec. Hello, Sachin sir. Good evening, sir. Hello, hello. Hi, sir. Can you hear me? Yeah, Sahil. Yeah, I can hear you. Can you hear me? Perfect, perfect, sir. Perfect, perfect, sir. Hello, Okay, everyone. okay. Can you hear me, guys? A quick yes or no, guys, in the chat box, guys. Quick yes or no.
I just can see two people. One is Sakshi and one is Vaibhav replying. What about others, guys? Yes, yes. Everyone. So there are approximately 45 students. I'll wait for 45 replies. I am that patient, guys. Perfect. So Sachin sir, uh, Sachin sir, can you hear me? Yeah, I can hear you, Sai. Yeah. Good evening, all the students of Raisoni College. Last weekend, we have started with GRE session by Subodh sir. I hope you have enjoyed and you have attended. From this weekend, we are starting with your CAT and in general aptitude preparation with Sahil sir. And this will be continued every weekend. You will have 2 to 3 sessions dedicated for CAT, aptitude training, and GRE. And Sahil will be your chief mentor for GRE, CAT, and other aptitude examination preparation uh, courses. Sahil will be discussing with you today, and from today only, we will be starting your session. So, Sahil, I think you should talk to the students more about the roadmap, how you're going to prepare. Perfect. I'll do that. So hi students. We have Rohan sir with us. So Rohan sir, to give you a background about Rohan sir, he is a pass out from IIFT College. IIFT College is amongst the only two colleges in India that has paid a salary of say 1 crores per annum for the first two students. Okay, they have been doing this years and years back again. So it is an immense big achievement for any student across the country to get into such elite colleges. So guys, to discuss this again, so we at Edvicon Educare, I run a company named as Edvicon Educare. So we train students across verticals. So you call it an engineering entrance exams, you call it corporate training programs, you call it aptitude exams, you call it law entrance exams, you call it management entrance exam, be it CAT, GRE, GMAT. So I take care of these products across verticals. So what the most important thing which I believe that is going to be an extremely essential and important part for you guys to understand is what we are here is we are here with an objective. Now the objective might be different for everyone. So when you talk about say a student who has a specific goal of working with XYZ company post engineering, correct? Or a student who says, "Okay, I want to do further studies," right? So me having sharing the same platform with everyone, what my responsibilities are going to be is keeping in alignment with all the students so that at the end of the class, all 50 students who are over here should gain each and everything, and these details should be vital and should be useful to everyone. Agree, guys? Yes or no? Quick yes or no? Perfect. So guys, to give you an example, whatever we are going to learn here, okay, it's going to be extremely crucial from the point कि हमें job चाहिए. Now, when we talk about getting job, okay, so what is going to be extremely important? So you target any company across country. You target any company across country. Aptitude is going to be extremely crucial part. So why are we going to do aptitude? Is because we have to nail it. If we do not nail it, we are not going to be qualified for the personal interviews of any good company. Or when you talk about any good B school, you have something called as entrance exams, which is nothing but aptitude entrance exams. So what you need to do in such scenarios is you need to train yourself for these exams. So now how do you train yourself is going to be the next question. So that is the reason why me along with all my students, all my faculties are over here to share our knowledge, to share our experience. So if I have to tell you in terms of who all people I have got on board. So I have got people on board from right from all the top IIMs, IIFT colleges, NMIMS, SP Chain, Janalal Bajaj, everyone. Correct. So when we are doing this, what is going to be extremely important for you guys is it's going to be takeaways from it.
correct? If you do not pester the faculties, correct? See, today, if you ask me one thing, the big element that I'm going to bring is I'm going to bring corporate experience into picture. Now, next weekend, we are going to have a lecture from one of the person who is currently working in Google. So she works in Google in the Google headquarters, which is located at Hyderabad. So if you ask me in terms of the number of people I know from Google, it won't be more than the number of fingers I have on my hand. That will be the same case with most of the people, correct? So when such is the case, and when I believe कि हमें daily opportunity नहीं मिलती to meet someone from Google, right? So when you are getting such big opportunities, why not take the best out of it? I just don't want you to come, attend, learn formulas and go. If that would have been the case, I would have clearly told Sachin sir, नागपुर में भी काफी faculties होंगी जिनको averages, simple interest, compound interest, percentage, profit and loss ये सब chapters आते हैं. अब वो ही पढ़ा लेगी, correct? But that's not what me and Sachin sir had the plans of. So when me and Sachin sir decided this, we had a clear motive of actually changing the lives of the people. MBA exam. So when we say this, we are clearly and extremely focused on changing the perspective of your mindset. Now, guys, how many people over here say have dreamt that at the age of 28 you want to earn 28 lakhs? Be frank. If you have thought about it, reply yes. If you have not thought about it, reply no. Yes, Vaibhav says yes, extremely good. See, again, there is no issues of saying no. If you ask me 3 years back, I have never thought of, yeah, I will work in corporate, or I'll have my own company. So it is extremely fair on your part to say a no if you have not dreamt about it yet, or if you did not have the thought process. I had a lecture with another college in Nagpur. There were many people who upfrontly said कि नहीं sir, हमने नहीं सोचा ये. Makes sense. नहीं सोचा. We have not lost on time. Correct. So we are here to learn. So I see a lot of people over here have actually thought about it. So that is extremely motivating for me. Correct. So when that is the case, now, so when you guys know you are clear with the thought process, so we are here to channelize it about how are we going to do it. Are we pressing the right button at the right time? Is what is going to be extremely important. Are we going to channelize our goals in the right manner? Are we under the right mentorship? If all these questions are answered by you, then you are at a very right place. And that's what is going to be our extremely big objective. We just do not want you to come here, attend lectures, know formulas, get marks. That's all fine, guys. You will get this at anywhere. The extremely big objective is to get results, to convert that 18 lakhs ka dream into 18 lakhs ka bank account mein credit hona. That is where is my job that is come into picture. If you dream about it, if you have a particular reality, getting it possible, getting it pragmatic in life into implementation is going to be my job. I am there as a mentor to help you guys, to take you into that steps. I have people associated me who have actually done it. Guys, the most important thing is what? There are a lot of people who will say do this, do that. But the people who have actually done it, उनसे जो सीखने का मजा है ना, that is going to be extremely different. Because the people who have nailed it actually knows what it takes to do it. So to give you my background, I have done my MBA from a college called Narsi Munji, NMIMS. So I've done my MBA from NMIMS, and I have a 5 years corporate experience working with edtech companies, working with Tata Groups, working with Future Group. So these are the two big brands that I've already worked with. So what gives me this confidence of doing is because I've actually done it. I know what it takes, and people who have actually done it now will never tell you कि यार ये difficult है. Now if you ask some of your friends कि यार मुझे 10 लाख की जॉब मिलेगी कैंपस के बाद, they will have that doubt. They will always be hesitant कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी. Correct? But people who have actually done it,
we'll always tell you that Milegi, this is the process, this is how you have to do it, this is how you have to channelize the entire process. This is what it takes to actually do it. See, everyone comfortable with Marathi over here, correct? Yes or no? Almost everyone. No, I will. Yeah, Devanshi, I saw you're not correct. See, everyone has dreams, correct? Everyone has dreams. Everyone wants to do it, but to change that into implementation, it's a process. ठीक आहे, हे एका दिवसात होणारी गोष्ट आहेच नाही. When you think about achieving something in life, guys, just remember one thing. It is a change that you have to bring in from today. That will result in an output on day 100, day 200, and day 400 from the time you have started the process. If you are not able to bring the change today now, you cannot expect the results say 2 years down the line. Why? Because are the results gonna change drastically? No, it's not gonna change drastically. Is the process gonna give you immediate results? No, it's not gonna give you immediate results, right? So that is the reason what I'm telling you is focus on change. I'm not saying if you're doing XYZ things, do ABC, but at least XYZ कर रहे हो ना, X -1 थोड़ा 10% change start करो. 10% change is here. What matters and what is going to be extremely crucial is all about your thought process. How are you going to go about with it? If you are able to have a clear thought process, you will be extremely successful and understandable about how do you go about with your further part. Guys, understand one thing. When I was into my undergrad ना, same phase होता, हाच same आता जो phase आहे ना तुमच्या बरोबर, exactly same phase होता. So what was happening with me is there were a lot of people around me chilling and doing time pass. The objective was what? कि यार college है. Who studies in college? Exam के पहले पढ़ो, pass हो जाओ, हो गया. Or undergrad, correct? That was the time when I actually decided कि शायद let's give 6 to 8 months of my life to something called as entrance exam. Let's give it. What will happen? I will just miss out on 6 to 8 months of enjoyment, correct? Nothing else. They'll enjoy. I'll enjoy later with them. Nothing else. Correct. So when I did this and when I was able to crack NM, okay, now it's been 5 years. I graduated in the year 2016. It's been 5 years that I have graduated now. There's a huge difference between me and them in terms of thought process, in terms of financials, in terms of mental well-being. I have a bit better clarity in terms of what I need in life. Why? Because I gave my effort. I had the right mentors with me. My thought process was channelized at a very perfect time. That is the reason why we are here for. We are not here just for teaching, guys. We are not here for telling you can do this, do that. What happens at majority of the places, the faculty comes, the faculty teaches, earns a salary, the classes earns its salary from the students, and they go. Nothing more than that. Right? My objective with you guys is not this. My objective with you guys is very clear. If in this batch of say, if in the bunch of this 50 people, if I am able to directly impact even 10 people's life change, thought process, if they are ready to give their 100% with me, I am here to get their dreams into implementation and give them the money that they want. Simple. For everyone, the word happiness has a different meaning. I am here to deliver that happiness into implementation, into execution that will help you guys to get it. नाहीतर आपल्या डोक्यात हेच ना हमेशा राहणार की आपल्याला हे करायचं होतं, आपण हे ट्राय केलं, आपल्याकडून नाही झालं, का नाही झालं? डू वी नो इट? हॅव वी चॅनलाइज्ड इट? हॅव वी थॉट ओव्हर इट? आपल्याला ह्याच्या आधी अशी ऑपॉर्च्युनिटी मिळाली एंट्राय करायला अशा लोकांबरोबर? नाउ रोहन सर इज अ पास आउट फ्रॉम IIFT, which comes under the top 4 colleges of India. Not Mumbai, not Maharashtra, not Nagpur.
not even say West Zone, it is India. You are understanding की आपल्याला कोणाकडून शिकण्याची opportunity आहे. It is not every day that we get a chance to interact with such people. Even when I met Rohan sir, there are a lot of learnings even I get from him today, and it's same vice versa with him. So when that is the case, when we are here to get the best out of you, okay, when we are here to run a program which helps you in getting quality education, so your only expectation is to give 100%. Yes or no, guys? Agreed with me? Only 5 people have said yes. 10 people, around 14, 15 people, 20 odd people. I'll wait. See, I have a lot of patience, guys. I am in no hurry. Yeah, I want actually 50 people to say ki mala patla ki nahi patla. Simple, yes or no. I am very open for criticism. If you tell me that you did not like this, I am fair. It's fair enough. So it is extremely crucial and important for you to follow it. Get the best out of it. Get the best. Actually, now Rohan sir, when today's lecture will explain you about what is the process for CAT. How do you want to get it into it? आपल्याला एंट्रन्स एक्झाम साठी काय प्रिपेअर करायचं असणार? अगर आपल्याला एंट्रन्स एक्झाम साठी नाही प्रिपेअर करायचं तर आपल्याला कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम आहे आपला, करेक्ट? त्याच्यासाठी एंट्रन्स कॉर्पोरेट मध्ये आपल्याला एंट्री करायची, करेक्ट? Which entrances do you have to give? What are the questions that are actually going to come in such entrances? These are the questions which are going to be taught. See, if I give any student a maths ka paper na, he'll be able to solve that same question in 4-5 hours. But what is extremely important is, are you able to solve that same question in 2 hours in the exam? That is why we are here for. That is why Rohan sir is here for. He is going to teach you the extreme best techniques that is present in the country. He has actually done it. See, every exam you say CAT, SNAP, NMAT, CET, या सगळ्यांचा ना एक पेपर पॅटर्न फिक्स असतो जो आपल्याला आपण when we are doing into engineering also, we know की there is a paper pattern. हा क्वेश्चन 10 मार्काचा, हा चॅप्टर एवढा मार्काचा. IFT is the only exam na which does not have a paper pattern. Correct? So to crack that exam na, someone has to be extremely brilliant in all the because you said तुम्ही 10 चॅप्टर पैकी 8 चॅप्टर मध्ये खूप स्ट्रॉंग आहात, पण 2 चॅप्टर मध्ये यू आर नॉट एबल टू क्रॅक इट. व्हॉट विल हॅपन? त्याच 2 चॅप्टर चालला तर विषयच संपला, बरोबर? सो त्याच्यासाठी रोहन सरचं स्ट्रेंथ आहे की त्याला पूर्ण त्यांनी सिलेबसचा अभ्यास खूप चांगल्यापणाने अभ्यास करून गेलेले. दॅट इज द रिझन ही इज एबल टू क्रॅक सच इलाइट एक्झाम्स. So that is how we have to learn from him. We have to gain strength from him. He will go at a very slow pace. What we have decided, me and Rohan sir had a meeting prior to this. So what we decided, let's go extremely slow. Okay. What will this result in is getting your basics extremely strong. आज तुम्हाला वाटणार की खूप इझी शिकवतात आहे, पण 1-1.5 महिन्यानंतर ना आपण जेव्हा ऍडव्हान्स पार्ट मध्ये जाणार ना, तेव्हा काय फरक पडणार? तेव्हा ऍडव्हान्स मध्ये जेव्हा तुमचं इझी कन्सेप्ट येणार ना, तेव्हा दॅट इज द टाइम वेन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्विकली, बिकॉज यू हॅव शेअर्ड टाइम ऑन युअर बेसिक्स. यू टेक एनी फील्ड, not just studies, not just education, take sports, take technical, take politics, everywhere. तुमचा अगर बेस स्ट्रॉंग असणार ना, बेसिक्स एक्स्ट्रीमली स्ट्रॉंग असणार ना, that is the only point when we are going to be successful in any field that you go. Correct? Rohan sir, all up to you, sir. Thanks a lot, Sahil sir. So all up to you. And guys, a quick thumbs up if you have found this knowledge to be valuable. Quick thumbs up. Perfect. Lot of people. Okay, guys, you sure? I'm very sure that you'll get a lot of things to learn from Rohan sir. And Rohan sir, let's ensure that these guys are very active in their chat box. Sure. That we will come to know about how they are doing. Okay, Sure. guys, just one request from you: be active in chat box. Let even Rohan sir know that you are knowing, you are understanding all the concepts. Okay.
Arunchal, I will join at the end of the lecture. Okay. Sure. Thank you, sir. Bye, guys. Hi guys, am I audible? Yes, sir. So please say I don't use chat that much. Okay. Please unmute yourself and say if you have any doubts. Don't put in chat. If you have any doubts, kindly unmute yourself and say. Okay. So first of all of you comfortable in Hindi and both. Both. Okay, let's start. So is my screen visible? Please let me know. Don't put in chat, please. Guys, don't put in chat. Okay, if you have any doubts, please unmute yourself and say. So I'll be sharing you some inputs about what is the CAT exam, what is the pattern of the CAT exam, and what is the syllabus that we'll be teaching you. Okay. So mostly what happens is, so this is the process. You must have heard of various IIMs like IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, Lucknow, Kozhikode, and different colleges apart from that. So mainly, so there is so CAT exam is for various IIMs across the country, and ZAT exam is for the XLRI college in Jamshedpur. That is one of the top colleges in our country. IIFT for IIFT Delhi and Kolkata. And main thing is SNAP exam is for Symbiosis, which is in Pune. Apologies for the handwriting, guys. And MAT for the Nasi Munji. Okay, the main thing is Nasi Munji is in Mumbai, Bangalore, and Hyderabad as well. So mostly these are the top exams in our country, and CET for JBIMS. So the thing is, there is a procedure that they follow in terms of in getting you to that college, particular college. So mostly what is this, that the thing is registration of the CAT starts from August. Then you have to take the CAT exam in November. It mostly happens in the last Sunday of the November. And then in January, mostly the results come. And after that, like there is a main thing is initially after the exams, there is WAT TI. WAT means written ability test or the essay that you can think of. So understand this. The main thing is after giving an exam, there is a weightage given to 10th score, 12th score, your CAT score, 10th, 12th, and graduation score. And then there is a list prepared in which you are invited for VAT and PI by each and every college. And then after that, then there is a weightage of VAT and PI, which is around 50%, that varies across all the colleges. And then after that, you are like selected in the various colleges and you're given the admission letter there. Any confusion till here, guys? Guys, any confusion? Guys, please speak up. Bol do. No, sir. No, sir. Okay. No, sir. Thanks. Thanks a lot. So the main thing is until 2019, what happened is from 2015 till 19, the CAT exam was for 3 hours. But due to COVID and all, it was changed to 2 hours. In 2020, it happens for 2 hours, and this year also it will be for 2 hours. So there are three mainly sections in CAT, which is verbal ability and reading comprehension, that is known as VARC, data interpretation and logical reasoning, known as DILR, and quantitative aptitude, known as short form QA or quant. The main thing is initially, since the exam was for 2 hours, now so each section was for 60 minutes. But now the main thing is it has been reduced to 40 minutes. And the section order is fixed. First of all, you will get the VARC section, then you will get the DILR section, and then the quant section. The main thing is there are 3 slots offered to you. The main thing is you can't select the slots. They are given randomly basis.
So main thing is you should be prepared to like write the exam in any of these slots. And in 2020, there were around 76 questions in total across all the three sections, and each section carried +3 and -1. So total of 228 marks. So what happens is CAT consists questions of two types. One is MCQ, one is non-MCQ. So for MCQ questions, you are awarded +3 marks, and for non-MCQ, you are awarded -1 if you get it incorrect. Okay, and you are awarded 0 marks if you left the question. In non-MCQ question, you are awarded +3 for the correct one, but 0 for the incorrect. There is no negative marking here. Okay. Any confusion till here, guys? No, sir. Okay. No, sir. So maybe in 2020, the CAT exam had around 26 questions in verbal, 24 in DILR, and 26 in quant. So 18 of MCQs, 8 of non-MCQs, 18, 6, and 18, 8. The total of 78 questions, 228 marks. Okay. This was the pattern being followed in 2020, and mostly that will be replicated in 2021 as well. But we are not sure if the same number of questions will be kept, because that the CAT doesn't disclose this before the exam. So this is the syllabus mostly that I'll talk in brief about. In VRC, you are taught about the verbal ability. For example, there is a topic known as jumbled paragraph. What happens in this is that you are given 4 sentences, and these sentences these are the jumbled sentences. You have to arrange them in the order, like such that they form a meaningful, you can say the meaningful meaning of that particular sentence, or by arranging them in this particular order can come. So mostly there's also odd one out type questions. For example, if there are 4 sentences given to you, one of the sentences does not fit the context of the other 3 paragraphs that they fit. So main thing, for example, this will be the odd one. So we have to type in the answer. So there is a reading comprehension that you must all know. Like for example, there is a comprehension given to you, and around 4 or 5 questions are asked. And the main thing is synonym antonyms. Like you are given a word, and then the opposite or the like same meaning of that particular word is asked to you. And grammar, like different grammar rules that you must have read till 10th. Mostly little, you can say a little bit of tough questions are asked in grammar mostly. But nowadays grammar is not being asked that much by CAT, but all the other examinations apart from CAT, they tend to ask grammar. So you must be prepared well with these topics in VARC. DILR mainly, these are the different topics that they ask you. Different types of graphs are there, like bar graph, column graph, line charts, and there is a topic known as Venn diagrams. I'll teach everyone, each and every topic to you, but don't worry that I'm only explaining the syllabus. Like a little bit questions about calendars, clocks. So the main thing is you must be aware of the seating arrangement. Like for example, 10 persons, they have to be arranged in a linear seats. Like there are 10 seats given to us, and we have to arrange these 10 persons in these 10 seats. And so these are type of questions they tend to ask. In quant, mostly, so this has been divided into mostly 4 or 5 topics. So first is arithmetic. Arithmetic consists of averages, mean, median, mode, percentages, ratios, simple interest, compound interest, profit and loss, elegant and mixture, time and work, and time, distance, speed. There's another topic known as number system in quant as well, where the basics of numbers, HCF, LCM, you must be aware of, divisibility rules, different type of theorems in order to find the remainder, and all base systems. These are the topics like find out last 2 digits, last 3 digits. These are the topics that has been asked mostly in number system for the syllabus of CAT and other, you can say, these full entrances. And another topic in quant is for algebra. Like you must have studied quadratic equations, linear equations in your till 10th, inequalities, logs, these things on different types of graphs, like y equals to x, y equals to x square, something like that. So mostly these are the different type of topics which are in algebra section of the CAT exam and other examinations as well. And the geometry syllabus consists of triangles, areas, different type of angles that is being asked, quadrilaterals, different type of polygons, hexagon, pentagon, circles, trigonometry, sin x, cos x, these things mostly they tend to ask in CAT and other useful entrances. And the last topic that has been asked in quant will be the modern maths, which consists of sequence and series, binomial, like PNC, probability,
these type of questions. You must have studied most of the topics till 10th, but the main thing is here in CAT examination, you must be aware of how to apply these concepts. That is very important. Okay, this is the theory and the, you can say the formula part will be like you must be remembering it. But the main thing is, if I'm giving you like 1 hour, since I told you that CAT exam is for 40 minutes, but if I'll give you 3 hours not to solve the paper, you will be solving it on your own itself, because these are the questions that you have solved until 10th. But the main thing is, in 40 minutes, if you have to solve, then you have to learn some tricks, or in order to like do the calculations fast, in order to so save some time. For example, let's say if you have in 10 questions, you have used some simple tricks and all, and you save 20 seconds in each question, you have saved total of 200 seconds, which is approximately 3 minutes. So the main thing is you can solve 2 more questions in this. So in this way, you can be like ahead of your the competitor that is also given the exam. So main thing is I'll be teaching you this today. So try to like learn. So I'll be sharing my screen again, just a sec. Is my screen visible? Yes, sir. Okay, thanks. Yes, sir. Okay. So the main thing is what I'll do, I'll share one question with you, and then you have to think for 2-3 minutes. Try to think of a different approach from the traditional approach that you used to think, used to solve the question. Try to come up with a different approach, and then tell me, and then we'll like I'll tell you a different approach how we can solve that particular question. So this is the question. Try to think of a different approach in solving this question. Guys, Sahil, Pratik, so you got 41.93. How? Can you tell me the approach? Hello, am I audible? Hello? Yes, Pratik, Yes, sir, you please. are audible. Yeah, thanks. So Pratik, yeah, please tell me how you got 41.93. Okay. So for example, if we need to find, so the main thing is I'm not following a traditional method here. Okay. The main, understand this. For example, if we need to find what is 2 is what percent of 4. Let's say this is an example. So how you do it in a traditional way, 2 by 4 into 100, which is nothing but 1 by 2 into 100, which is 50%.
So here also the traditional method will be what? 78 by 186 into 100, which will come out around 42%. But let me like solve it in a different way. So guys, what is 10% of 186? Guys, speak up, please. 18.6. 18.6. What is 20% of 186? 2 into 18.6, 37.2. Correct, guys? Yes, sir. What will be 40% of 186? $74.4. So we need 78. We have got 40% as 74.4. We need how much more? 78 minus 74.4 is nothing but 3.6. We need 3.6 more, and we have got 40% of 186 as 74.4. Understand this. What is 1% of 186? 1.86, or we can say 1.8 approx. So 2% of 186 will be what? 2 into 3.6. 1.8, 6. So understand this. If I add 74.4 and 3.6, I'll get 78 as in my answer, which will be 40 plus 2, approximately 42%. Getting the approach, guys? Yes, sir. Yes, sir. Anyone not getting the approach? Please tell me. I can explain it again. Guys, Sir, can you just explain it again? show ma'am. Understood till here? What is 10% of 186? Yes. Yes, sir. 20. Huh? No? Yes, sir. Understood. Understood? No? Huh? So what is 20% of 186 will be 2 into 18.6, correct? Yes. 40% 2 into 37.2, 74.4. We need 78 as what percent of 186? We have got 40% as 74.4. I need 70. We need to find 78. I have got till 74.4. I need 3.6 more. 1% of 186 is 1.8 approximately. 2% will be 3.6. So if I'll add 40 and 2, I'll get 42%, which will be 74.4 plus 3.6, which comes out to be 78. So by using this method, the main thing is it might seem to you that it will take a lot of time, but understand, if you solve like 50, 100 questions with this method, then it will be solved within 10, 20 seconds. This might take around 30, 40 seconds to solve. But the main thing is, if you use this method, then it might take 20, 25 seconds maximum to solve. Understanding, guys? Yes, sir. Ma'am, understood it? You had a doubt here. Yes, sir. Any other doubts, guys, in this? Guys, no doubts? Shall we move forward then? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Again, try to use a different method, please. Not the traditional method.
Done, sir. Okay, what's the answer? 2368. 2368. Okay, so which method you used? Traditional one. So I multiplied 64 by 40 and then subtracted 3 times 64. Chalo, good, good. Any other method, guys? Any other method, guys? Sir, I multiplied it with 30 and like added after that 64 into 7. Like चलो it came वो out भी कर सकते हो good 1920 plus सही 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 you can do that as well good चलो और next choice और कोई method guys और कोई method So 60 plus 4 into 30 plus 7. चलो बहुत बढ़िया ये भी कर 60 plus 4 into 30 plus 7 ठीक है चलो वो भी कर सकते हो चलो ठीक है और किसी का कोई मेथड लास्ट ठीक है so understand this I'll be doing in the 3-step approach okay so we have to calculate 64 into 37 the step 1 is to multiply unit digits of both numbers 4 into 7 which is 28 this will be a 4-digit multiplication so try to take 8 as a unit digit of the final answer this is the final answer and 2 as the carryover step 2 is to multiply unit digit of 1 with tens digit of other and vice versa so here I'll be multiplying 6 into 7 and 4 into 3 then add so 54 now I have to add the carryover to here 56 so 6 will go as a tens digit of my final answer and 5 again as the carry over now step 3 is to multiply the tens digit of both numbers so 6 into 3 and adding the carryover to now I'm putting the whole as my final answer 2368 guys understanding this Yes, sir. everyone Yes, sir. Yes, sir. chalo I'll give you another questions try to use the same logic Sir, please give time to note that. sure sir take time to copy so guys all of you are engineers okay
Copied, sir? Yes, sir. Yes, sir. So shall we do now 93 into 38? Try to use the same logic. Sir, how 131 it will come? Prathamesh? Sir, it is addition. No, It's sir. okay, Sorry, sir. Sorry, sir. multiplication. Sorry, sir. I misled. I didn't. Okay, no I problem. didn't- Ah. So Devanshi used a similar approach. Devanshi. Himanshu, Sahil use a similar approach. Yes, sir. Yes, sir. So what was step 1? Multiplying the unit digit of each one, which is 3 into 8, 24. I'm taking 4 as the final answer unit digit and 2 as the carryover. Step 2 was to multiply 9 into 8 and 3 into 3. 9 into 8 is what? 3 into 3 is, we have to add those, 81. And we have to add the carryover to 83. 3 will be here. 8 again, carryover. Step 3 is to multiply the tens digit, 9 into 3. 27 plus carryover 8, 35, 35, 34. Anyone got 3534? Yes, sir. Good. Guys, understood how to solve this? Yes, sir. Any doubts, guys? No, sir. Guys, सबको समझ में आया? पूछ लो प्लीज, शर्माओ नहीं कोई. If you solve 20-25 questions of this logic now, it will take not more than 20 seconds. इजी हो गया सर? सबको इजी लग रहा है थोड़ा सा? अब मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट का. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो बढ़िया. चलो यार सॉल्व करो. कोई थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक लगाना.
Guys, getting the answer? 9711. फिर से सर लॉजिक कोई बता सकता है? कुछ अलग लॉजिक यूज किया किसी ने? गाइस, किसी ने डिफरेंट लॉजिक यूज किया? प्लीज बता दो. Sir, y multiplied by 100, then adding multiplied by 20, and then subtracting multiplied by 3. चलो, और एनी डिफरेंट अदर लॉजिक? एनी अदर लॉजिक गाइस? आई एम नॉट कंसर्न विद द आंसर गाइस. थोड़ा सा लॉजिक पे फोकस करो, आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स मतलब थोड़ा लॉजिक पे फोकस करना, भले आंसर लेट है कोई टेंशन नहीं है. सबने आइडेंटिटी पढ़ी होगी. क्या होता है सर आगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सबको पता है? Yes. So 83 can be written as 100 minus 17, and 117 can be written as 100 plus 17. This is A, this is B. A minus B into A plus B will be what? 100 square minus 17 square. 100 square is 10,000 minus 289, which will come. So 10,000 minus 300 will be what? 9,700. You have to add 11. Guys, understood? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट्स है इसमें? सर अगर ये प्रीवियस मेथड से हिसाब से किया जाए तो कैसे करेंगे? मैम प्रीवियस मेथड जो था ना वो सिर्फ 2 नंबर्स इंटू 2 नंबर्स के लिए है. ओके समझ लो, 2 डिजिट नंबर इंटू 2 डिजिट नंबर. ओके चलो गाइस, फिर से सोचना जो बोला है मैंने, कैसे कर सकते हैं. इसके गाइस 3 मेथड्स बताऊंगा मैं आपको. एक दो मेथड तो आप भी देख लोगे. Nadia, how you got 4356? Care to explain, please? Yes, sir. First, 6 square is 36. So I write 6, then carry 3. Then 6 multiplied by 6 is 36. 36 into 2, 72. Then plus add 3 is 75. So I written 5, then 7 carry. Then 6 square is 36 plus 7 is 43. So 4356. Excellent, ma'am. Excellent. Good, good. Any other method, guys, in this? So 60 plus 6 whole square, a square plus बहुत 2ab बढ़िया, plus b square. बहुत बढ़िया सर. और कोई मेथड? चलो गाइस, बहुत बढ़िया. सो फर्स्ट मेथड जो मैंने आपको बताया था कि 66 इंटू 66 करने का. तो पहला स्टेप 1 क्या था इसका? यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करने का. 6 इंटू 6 36. 6 याला यहाँ जाएगा, 3 कैरी ओवर जाएगा. स्टेप 2 क्या था कि इसका यूनिट डिजिट इसका 10 से मल्टीप्लाई करना, इसका 10 से इसका यूनिट से मल्टीप्लाई करना, सब सेम है. 72. अब इसमें 3 कैरी ओवर 75. 5 यहाँ जाएगा, 7 अपना कैरी ओवर. स्टेप 3 क्या था कि हम क्या करेंगे इसमें?
6 इंटू 6, अब 10 डिजिट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 36 प्लस 7, क्योंकि कैरी ओवर था, 43, तो ये अपना 40। इसका मेथड 2 क्या है कि सर, जैसे सर ने बताया कि 60 प्लस 6 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फटाफट आइडेंटिटी बता दो सब। a square plus 2 plus b square. बहुत बढ़िया। सो 60 प्लस 6 का होल स्क्वायर क्या है, 3600 प्लस 36 प्लस 2 into 60 into 6, दिस कैन बी 36 720, इसको ऐड करोगे 4356 आएगा। अब जो थर्ड मेथड बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो मेथड बता रहा हूँ, दैट इज फॉर एनी स्क्वायर बिटवीन 26 and 75। ठीक है गाइस? सो इसमें क्या होता है, स्टेप 1 है ना, वो क्या है कि मैं जो भी नंबर है मेरा 66 है, इसको मैं 50 से सब्ट्रैक्ट करूंगा और उसका स्क्वायर कर दूंगा, 256। ये कितना आ गया, 16 का स्क्वायर आ गया ना, 16 का स्क्वायर होता है 256। इसका लास्ट 2 डिजिट मैं अपने फाइनल आंसर में लिख दूंगा और 2 मैं कैरी ओवर ले जाऊंगा। स्टेप 2 मेरा क्या है कि 66 माइनस 25 कर दूंगा। याद रखना कि मेरा कोई भी स्क्वायर 26 से शुरू होना चाहिए, तो लास्ट इसके पहले का 25 उसे मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, ये मेरा आएगा 41। मैं इसमें स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ, अब मैं इसमें कैरी ओवर ऐड कर दूंगा, तो 41 प्लस 2 43, ये मैं यहाँ लिख दूंगा। यह मेथड कोई भी स्क्वायर बिटवीन 26 एंड 75 के लिए एप्लीकेबल है। गाइस समझ रहे हो? समझ में आया ये Yes, sir. मेथड Yes. सबको? Yes, sir. सबसे इजी कौन सा लगा, 1 की 2 की 3? So 3. 3 वाला पर प्रैक्टिस। थर्ड वाला थर्ड। तो जल्दी जल्दी हो जाएगा ना। चलो फिर प्रैक्टिस करते हैं, 2 क्वेश्चन कराता हूँ। एक करो, चलो 41 का स्क्वायर निकालो, एक में 74 का स्क्वायर निकालो। चलो इसी मेथड से, मेथड दिखा दूं एक बार। गाइस सबका आंसर क्या 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 आ रहा है? चलो
1681 and 5476. चलो ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या था इसमें कि 41 माइनस 50 होल स्क्वायर 81, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या कर रहे थे गाइस, ये कर रहे थे गाइस? Yes, sir. इसमें कोई कैरी ओवर नहीं है, सो सीधे 16 लिख देंगे। 74 माइनस 50 का होल स्क्वायर इज नथिंग बट 576। 24 का स्क्वायर 576। सो इसमें 76 लेंगे, 5 कैरी ओवर। तो 74 माइनस 25 इज नथिंग बट 49, लेकिन फिर कैरी ओवर 5 है अपना, तो 50। गाइस एनी कंफ्यूजन है? No, sir. इजी लग रहा है? Yes, sir. मजा आ रहा है Yes, sir. बोलने के लिए? चलो ठीक है, कोई नहीं। सो मोस्टली अंडरस्टैंड कि कैसे अप्लाई करना है तो बहुत इजी हो जाता है। तो जब आप बैठ के सॉल्व करोगे, कुछ करोगे, ये मेथड अगर पता है, इसके 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करना खुद से, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो इसमें अब ये वाला सॉल्व करते हैं। याद रखना जो मैंने पहले अप्रोच बताया, डाटा इज ओनली एप्लीकेबल फ्रॉम नंबर्स फ्रॉम 26 to 75। गाइस एनीवन गॉट द आंसर? 9216 कैसे आएगा, इस बता सकते हो कैसे अप्रोच किया? 100 minus 4 square. और कोई मेथड किसी का? और किसी ने कोई और मेथड यूज किया? 90 plus 6 whole square. चलो, और गाइस और कोई मेथड? एक चीज सिखाता हूँ, ठीक है? अनदर मेथड, जो दो मेथड्स यू कैन यूज, 100 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 90 प्लस 6 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो तो लग जाएगा। जो मेथड है वो सिखाता हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है 100 से छोटा है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 होता है 100 से कितना छोटा है, कोई बता सकता है? और 96 कितना? 4, ठीक है।
तो उसमें क्या करते हैं कि सिंस इट इज लेस देन 100/4, सो वी टेंड टू फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी अ 4 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर, इसका स्क्वायर। 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट क्यों होगा सर? रीजन बता सकते हो? सर क्योंकि उसका स्क्वायर 30 से तो बड़ा ही होगा, 33 वगैरह से। 33 से क्या मतलब है? सर मतलब वो 30 तक के स्क्वायर 3 डिजिट में होते हैं, उसके आगे के स्क्वायर सब बड़े होंगे, और 100 का 5 डिजिट होता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। 100 का जो स्क्वायर होता है वो लीस्ट होता है, लीस्ट 5 डिजिट नंबर होता है, समझ रहे हो? तो मेन चीज क्या है कि ये भी 4 डिजिट नंबर होगा, 100 से कम है। सो मोस्टली क्या है कि हमने क्या किया कि 100 - 4 किया तो 96। अब मेन क्या है कि 4 से कम है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 4 का स्क्वायर करते हैं। 4 का स्क्वायर इज नथिंग बट 16, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। और फिर सेकेंड मेथड स्टेप 2 क्या है कि सिंस 96 इज 4 लेस देन 100, तो 96 में और 4 माइनस कर दो, ये यहाँ पुट कर दो। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। 93 का स्क्वायर निकालना है, मान लो 93 100 से कितना कम है गाइस? 7. 7 का स्क्वायर कर दो, जितना कम है 100 से, और फिर 93 में 7 और माइनस कर दो, कितना आएगा? 8649। समझ आ रहा है? Yes, sir. इजी लग रहा है? इजी हो गया? सर ये सब मतलब सिर्फ 2 डिजिट नंबर के लिए काम करेगा जो लाइक टू डिजिट नंबर के लिए काम कर रहा है सर, 100 से कम। तो फॉर एग्जांपल 89 का स्क्वायर निकालना है, 78 का निकालना है, वो भी चल जाएगा। 89 का स्क्वायर निकालो फटाफट से सब, और 91 का स्क्वायर निकालो इसी मेथड से। सर 7921। अच्छा ठीक है, 7921 और 8201। ठीक है सर। तो 89 100 से कितना कम है? 11। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। इसकी लास्ट 2 डिजिट लेते हैं, यहाँ 21 पुट कर देते हैं, 1 कैरी ओवर हो जाएगा। अब 89 में से 11 माइनस करो, 78। 78 प्लस 1 जो कैरी ओवर था। ऐसी 91 का स्क्वायर 91 100 से कितना कम है? 9। 9 का स्क्वायर 81। 91 में 9 और माइनस कर दो, 82। गाइस किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? गाइस एनी कंफ्यूजन हियर? सर ये 26 to 75 इसमें लगा सकते, ये अप्रोच? सर 20 नहीं सर, 26 to 75 में हाँ बिल्कुल लगा सकते हो। बात क्या है कि वो कैलकुलेशन तुम्हारा टफ हो जाएगा। बात समझो, फॉर एग्जांपल अगर मैं 74 का स्क्वायर निकालता हूँ ना इससे, मैं क्या करूंगा? 100 माइनस 26 है ना सर, 76 74। सो मैं क्या करूंगा, 26 का स्क्वायर मुझे पता होना चाहिए पहली बात तो, वो होता है 676। तो मैं 76 ले लूंगा और मैं 6 कैरी ओवर कर दूंगा। अब बात क्या है कि ये 74 26 से कम है। 74 माइनस 26 कितना होगा सर? 48। 48 प्लस 6 इज 54। हम लोग का क्या आया था पहले जब निकाला था? 75 और 76 ही आया था ना? यस सर। कर सकते हो। बात क्या है कि वो कैलकुलेशन थोड़ा टफ नहीं हो गया? समझ रहे हो बात? 26 का स्क्वायर निकालना पड़ रहा है ऐसा, ये चीज कह रहे हैं। ये ओके कहीं पे भी सर। लगा सकते हो, किसी में भी लगा सकते हो, लेकिन बात क्या है कि ये लॉजिक तुम उसको नहीं लगा पाओगे 50 से नीचे।
50 से नीचे अगर लगाओगे ना तो समझ लो कि 50 माइनस करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? जैसे 50 का स्क्वायर में 50 मतलब 49 का स्क्वायर निकालना है मुझे। 49 का स्क्वायर 100 से कितने कम है? 51। तो मुझे 49 माइनस 51 करना पड़ेगा, वो -2 आज। माइनस स्क्वायर में -2 सेंस नहीं है ना, समझ रहे हो बात? यस सर। तो वो वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। मेन चीज क्या है कि एप्लीकेबल उसी में होगा कि आपका जब 50 के ऊपर मान लो नंबर्स हैं तो। वही आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. नहीं आ रहा? आ रहा है? कोई रिएक्शन नहीं? Yes, sir. Got it. हाँ Yes, sir, got it. ठीक है ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब क्या कर रहे हैं कि 100 प्लस वाले का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 102 का स्क्वायर करते हैं, ये निकालो क्या क्या आएगा। यही मेथड लगाना। थोड़ा सा इस मेथड में थोड़ा सा चेंजेस होंगे, वो बताओ क्या होंगे। सर 10404। गुड। तो इसमें क्या कहता है कि 100 से अब ये कितना ज्यादा है? 102 100 से कितना ज्यादा है? 100 प्लस 2, ये कितना डिजिट होगा? 5 डिजिट नंबर होगा, 100 से ऊपर है। सो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। तो लास्ट 2 डिजिट 04। सो जो अब बात क्या है कि 102 में हम लोग ने ये 100 से 2 ज्यादा है, तो 102 में 2 ऐड कर दो तो 104। एक और एग्जांपल लेता हूँ, 109 का स्क्वायर करते हैं। 109 100 से 9 ज्यादा है, तो 9 का मैं स्क्वायर कर देता हूँ 81। अब ये 9 ज्यादा है, तो 9 में ऐड कर रहा हूँ। याद करना कि 100 से जो नीचे नंबर थे उसमें मैं सब्ट्रैक्ट करता उतना ही नंबर, इसमें मैं ऐड करूंगा 109 प्लस 9। भाई समझ आ रहा है? यस सर। Yes, sir. स्क्वायर्स अब बिजी हो रहे हैं थोड़े से निकालना। Yes, sir. चलो फटाफट से 2 और कर दो। वन 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 100 से कितना ज्यादा है? 11। 11 का स्क्वायर कर देते हैं 121। 1 इज द कैरी ओवर। ठीक है।
1 कैरी ओवर। अब मोस्टली क्या है, 111 प्लस 11 करेंगे तो कितना आएगा, 122। 122 प्लस 1 इज 123। 116, 16 ज्यादा है, 16 का स्क्वायर होता है 256। 56, 2 कैरी ओवर। 116 में 16 ज्यादा है तो ऐड कर दो, 132 प्लस 2 इज 134। सबका यही आ रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके गाइस, सबको समझ में आया ना कैसे करना है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, Yes, sir. चलो एक चीज समझाता हूँ कि एक काम करना, कुछ सिखा रहा हूँ तो जब भी आप जहाँ पर भी स्टडी टेबल पे पढ़ते हो, ट्राई टू मेक अ नोट ऑफ इट एंड ट्राई टू स्टिक दैट इन अ टेबल, मतलब पेपर, एंड ट्राई टू गो थ्रू इट एवरी वंस इन द मॉर्निंग। ठीक है, कुछ चीज सिखा रहा हूँ। 1/1 into 100, मैं what I am teaching you is how to convert fraction into percentage. So 1/1 कितना होता है, 100%। 1/2 कितना परसेंट होता है सर? 50. 50%. 50%. 1/3? 33.3%. 20. इलेवन 11.11%। ऐसे 1/20 तक निकालना एंड देन ट्राई टू स्टिक दैट इन द पेपर। इसका यूसेज क्या आता है वो बताता हूँ। मुझे निकालना है 55.55% ऑफ, मान लो 54। कैसे निकालूंगा, जिसको भी आए बताओ। ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है इसका? सर उसका 50% 27 हो जाएगा, हम्म, और 1% के हिसाब से प्लस 5.4 अपन लाइक 5 टाइम्स ऐसा करेंगे। चलो सर, बिल्कुल वो आप लॉजिक समझ रहे हो, लेकिन मैंने अभी आपको ये फ्रैक्शंस पढ़ाए तो दिमाग लगाओ, इसका इसका ही कोई ना कुछ यूसेज होगा ना इसमें, समझ रहे हो? हाँ वरना क्यों पढ़ाऊंगा मैं फिर वो चीज। हाँ सर 55.55% को लिख सकते 5/9. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। देखो सर, 1/9 इज 11.11%। तो इसमें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 5/9 क्या होगा, 55.55%। तो बस हमें क्या करना है, 5/9 और 54 निकालना है, कुछ नहीं करना। 9 6 30 आंसर आ गया मेरा। मैं ट्रेडिशनल अप्रोच लगाता, मैं क्या करता, 55.55 अपॉन 100 इंटू 54। मैं बैठ के इसमें डेसिमल हटा के 0 कर रहा हूँ, 5 से कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। बहुत टाइम नहीं लग जाएगा इसमें, ये कितना ईजी हो गया। ये अलग बताओ, 27.27% और 108। थ्री बाई 11। बहुत बढ़िया। सो 1/11 इज 9.09%। 3/11 कितना हो जाएगा, वही 7.27%। मुझे क्या करना है, बस 3/11 और 108 निकालना है। मान लो जो भी आंसर है, इससे फर्क नहीं पड़ता। गाइस समझ में आ रहा है?
एक लास्ट और कर लो। थ्री बाय सेवन। 3/7 बहुत बढ़िया। 1/7 कितना है? 14.28। 3/7 कितना हो गया? 42.84। 3/7 और 56 24। सो बहुत सारे एग्जाम्स में कैट में प्लस और एग्जाम्स जो मैंने आपको बताया जेड IFT है, सब में मतलब क्या होता है कि कैलकुलेशन आपको, दे आर नॉट टेस्टिंग की कैलकुलेशन स्किल्स कैसी हैं आपकी, दे आर टेस्टिंग कि आप दिमाग कितना लगा पाए। सो फॉर एग्जांपल वो कुछ भी क्वेश्चन में परसेंटेज में प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे करके ऐसा परसेंट देंगे जो कि इस फॉर्मेट में मोस्ट ऑफ द टाइम लग जाता है, समझ रहे हो? मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मोस्टली क्या है कि आपको ऐसे परसेंटेज देंगे कि आपको बस ये आपको पता है ये सब चीजें। तो ये सब चीज मेमोराइज करने की बात नहीं है, एक पेपर में आप लिख लो और क्या करो कि पेस्ट कर दो जहाँ पर भी पढ़ते हो, और सुबह एक बार बस रीड कर लो। ट्राई टू अप्लाई दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर कैलकुलेशन एज वेल जब भी कर रहे हो। तो समझ रहे हो? तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इस केस में, समझोगे? बहुत इजी हो जाएगा वो चीज। तो याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझो कि इसको यूज कैसे करना। सबको समझ में आ रहा है ये चीज? यस सर। Sir. Yes, sir. चलो एक और चीज बताता हूँ। एक और चीज, जब आप ये लिख ही रहे हो तो एक काम करना कि 1 से लेकर 30 के स्क्वायर्स और 1 से लेकर 15 के क्यूब्स, ये भी याद करना, क्योंकि ये भी काफी टाइम क्या होता है कि एग्जैक्टली तुरंत यूज हो जाता है। 27 का स्क्वायर होता है 729, 28 का स्क्वायर होता है 784, 26 का स्क्वायर होता है 676। ऐसे अगर आपको याद है ना तो काफी सारे क्वेश्चंस में आप जल्दी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मैं हर क्वेश्चन में अपना 20 सेकंड बता सकता हूँ ये सब कैलकुलेशन करके, तो मैं अगर 10 क्वेश्चन में बचा पा रहा हूँ तो मेरा 3-4 मिनट बच जा रहा है, तो उससे मैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, तो आगे बढ़ सकता हूँ। समझ लो क्यों इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें करना। अंडरस्टैंडिंग गाइस? यस Yes, सर। sir. यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला करो। सिक्स आंसर। बहुत 6. बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। सबका 6 है, किसी का नहीं आया वो मेरे को बताएगा प्लीज। जिसका 6 नहीं आया वो बताओ प्लीज। वही प्रॉपर्टी जैसे पढ़ाई थी, a-b इंटू a+b। तो याद रखना रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है? X. एक्स। रूट एक्स का क्यूब क्या होता है? एक्स रूट एक्स। या फिर x की पावर 3/2। ठीक है। सो मोस्टली क्या है इसमें, क्या है a-b इंटू a+b फॉर्मेट का ये क्या होता है, a² - b²। इसमें a हमारा √8 है माइनस √2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 - 2 विद 6। भाई सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके चलो नेक्स्ट करें। कंपेयर करने का मतलब क्या है कि कौन सा बड़ा है ये बताना मुझे। √2 बड़ा है कि 3? अच्छा एक चीज पहले उसके पहले बता देता हूँ आप लोग को। √x, √x², √x3, इन तीनों का मतलब क्या होता है, कुछ कोई बता सकता है क्या? इस मैम
guys, I'm audible? Yes, sir. You're audible. हाँ, yes ma'am, बताओ. सर √2 की वैल्यू 1.14 रिकरिंग है ना? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये तीनों का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ. Sir, root x to the power 1/2 स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। पहला x ये x है, 2/2 स्क्वायर नहीं है. x to the power 2/2। x to the power 2/2. 2/2 नहीं सर, 1/2 ये रिप्रेजेंटेशन. बात क्या है कि यहाँ पर जब 3 2 दिखते हैं ना, तो सेम ही होता है वो चीज. बात समझ रहे हो? ऐसे x की बात, रूट x के पहले 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि रूट ऑफ x ले रहे हैं, इसका मतलब क्या, क्यूब रूट ऑफ x ले रहे हैं. ऐसे ही अगर x के पहले, यहाँ पर रूट के पहले 4 लगाए तो x के पावर 1/4 है वो. समझ रहे हो इस? Yes, sir. Yes. ये रिप्रेजेंट हम लोग क्या करते हैं, Yes, sir. 2 की लोग मैथमेटिक्स में बस यही करते हैं कि 2 यहाँ पर की जगह बस बिना 2 जरूरी नहीं है लिखना है सर. तो मोस्टली ऐसे करते हैं. तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि 2 की पावर हमें 1/2 और 3 की पावर 1/3 इसको कंपेयर करना है कि ए ये बड़ा है, बी 2 की पावर 1/2 इक्वल है, या सी 2 की पावर 1/3 से छोटा है. सोचो, निकालो. Option A. ओके, और लोग कौन सा रहते हैं सर? नहीं, जिसका भी आए प्लीज बताना. साक्षी, साक्षी, यस सर। हाउ यू गॉट सी? हाउ यू गॉट सी? अरे बताओ, घबराओ, घबराते क्यों हो रही है? बोलो. तन्मय, बी कैसा है आपका? तन्मय, यही समय ऑडिबल ना? Yes, sir. Audible. हम्म. और किसी का एबीसी में से कुछ प्लीज बताओ. A. अच्छा, कैसे आया सर ये? सर 2 की पावर 1/2 को हम 2/2 स्क्वायर लिख सकते हैं. 3 की पावर 1/3 को 3/3 क्यूब. 3/3 क्यूब मतलब? थ्री बाई थ्री क्यूब मतलब सर? सर अपॉन में. अच्छा, 3/3 क्यूब ये बोल रहे हो? 1/3. 1 क्यूब तो 1 रहेगा तो 1/3 क्यूब. ये और ये 3 की पावर 1/3 और नहीं. ये सेम है सर? रूट में. चिराग, सर ए 3 कैसा की है?
हाँ सर 3 की पावर 1/3 इक्वल टू 0.33 समथिंग एंड 2 की पावर 1/2 0.50. नहीं सर, कैलकुलेशन से तो आंसर नहीं बताऊंगा मैं, मेथड से ही बताऊंगा, लेकिन वो भी कैलकुलेशन से गलत आ रहा है आपका। सी आंसर. सी आ रहा है, किसका आ रहा है सी? सी किसका आ रहा है सर, बताओ। बताओ बताओ गाइस, बी किसका आ रहा है? और बी आ रहा था ना एक और का, हिमांशु, बी कैसे आ रहा है? सर 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं और 1/3 को 0.33. तो चलो ठीक है। 8 to the power 0 इक्वल टू 1. 0? नहीं नहीं सर, चलो बताता हूँ। सर एलसीएम मेथड। हाँ मैम बहुत बढ़िया। कौन बोला मैम, नाम तो बताओ। अवंती। ओके, तो एलसीएम मेथड यूज कर रहे हैं इसमें। क्या देखो, बात समझो, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है गाइस? 6। तो क्या कर रहा हूँ मैं, मेरा जो पोर्शन है 2 की पावर 1/2, इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे मल्टीप्लाई। ऐसे समझो, x की पावर n और y की पावर n, अगर दोनों पावर सेम कर दूं तो मैं x और y को, इस पूरे टर्म को कंपेयर कर सकता हूँ। ये अगर x की पावर n इज मोर देन y की पावर n तभी होगा जब x इज मोर देन y, की पावर n लेस देन y की पावर n तभी होगा जब x इज लेस देन y। तो इसके दो मेथड हैं। एक तो मेथड क्या है कि मैं 2 की पावर 1/2 को क्या कर दे रहा हूँ, 2 क्यूब की पावर 1/2 कर दे रहा हूँ, ये सॉरी 1/6 कर दे रहा हूँ। ये समझ में आया सबको? 2 की पावर x इंटू वाई क्या होगा, 2 की पावर x इंटू वाई, 2 की पावर x होल की पावर y इज नथिंग बट 2 की पावर x इंटू वाई। वही किया मैंने, 2 की पावर 3 इंटू 1/6 इज नथिंग बट 2 की पावर 1/2। ये समझ लो सब। गई Yes, सबको ये sir. समझ में आ रहा है? यस सर. तो कितना हो गया, 8 की पावर 1/6। 3 की पावर 1/3 को क्या लिख दे रहा हूं मैं, 3 स्क्वायर की पावर 1/6, which is nothing but 9 की पावर 1/6। As I told you earlier, x की पावर n और y की पावर n, this is x की पावर n, y की पावर n. Now it is easier to compare ना, समझ रहे हो? Here y is more than x, so this term is will be greater than this term. Guys understanding? यस सर. Yes, sir. एक और मेथड बता देता हूँ, एक इसमें। So we had to compare 2 की पावर 1/2 and 3 to power 1/3. So try to take LCM, हमारा 6 आया था याद हो तो, 1 2 और 3 का। So इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी पावर ले लो। ये कितना है, 2 क्यूब, ये कितना है, 3 स्क्वायर। अब कंपेयर कर लो, ये 8 या 9, दिस विल बी ग्रेट, 9 इज ग्रेटर देन 8। अंडरस्टैंडिंग गाइस? यस सर। समझ यस रहे हो? सर. 6 से ही मल्टीप्लाई, या 6 से ही क्यों हमने दोनों तरफ किया, क्योंकि एलसीएम था। अगर फॉर एग्जांपल 4 और 8 होता तो हम लोग किससे करते, 8 से। समझ रहे, 4 और 12 होता तो 12 से करते, 3 और 12 होता तब भी 12 से करते। तो मेन चीज करना कैसे है, वो समझो, या एक बार ट्राई करो। हेलो सर, सर एक बार और दिखाइए ना वो वाला, सर 6 हाँ वाला. sure. Yes.
सर डन, नोट सर, नोट कर लीजिए। ओके गाइस, थोड़ा सा हिंट देता हूँ। एक आपने रूल पढ़ा होगा स्कूल में, वो अप्लाई करना है इसमें। किसी को याद है क्या? यस सर। गाइस, आंसर आया किसी का? सर 48। 48 आ रहा है। अच्छा, 56 56 आ रहा है। बहुत बढ़िया सर, कैसे किया बता सकते हो प्लीज? सर 48। 48। चलो अच्छा, वो भी कुछ 56 वाला कैसे आया पहले ये बताओ। तो 56 में पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, हाँ, पहले ब्रैकेट। सबसे बिल्कुल बिल्कुल सही। सो BODMAS rules applies that we have to start from left and move towards right. ब्रैकेट ऑफ, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन डिवीजन करते हैं, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। सो इस केस में क्या है कि 7 माइनस रूट ऑफ 9 कितना है? 3 इंटू 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर क्या होगा? 16। 16 माइनस 3 प्लस 1। सो मोस्टली क्या करना है इसमें, अब मुझे एडिशन वाला पहले सॉल्व करना है। ये हो गया 4 इंटू, ब्रैकेट के अंदर है तो सबसे पहले सॉल्व ये किया मैंने। देन उसके बाद मैंने 16 प्लस 1, 17 माइनस 3, सो 4 इंटू 14। जिनका 56 आ रहा है उन्होंने क्या मिस्टेक किया, सॉरी 48 आ रहा है, उन्होंने क्या किया यहाँ पर 16 माइनस 4 कर दिया इसको। सर 3 आप प्लस लोग ने क्या किया? हाँ सर वही सर 3+1 कर दिया था। देखो, हाँ असली में क्यों गलती है वो मैं बताता हूँ आपको। तो 16 प्लस ये -3 है, प्लस 1, समझ रहे हो बात सर? तो -3 प्लस 1 को आप ऐड करोगे, दैट विल -2। अब 16 माइनस 2, आपने क्या किया? 16 माइनस ऑफ 3 प्लस 1 कर दिया। ये गलत है क्योंकि बात क्या, 3 के बगल में माइनस साइन है तो वो -3 के साथ ही है, समझ रहे हो? दैट इज अलॉन्ग विथ 3। सो यू हैव टू डू आइदर -3 प्लस 1 करो या फिर 16 प्लस 1 -3 करो। समझ रहे हो सर? यस सर। Yes, sir. हाय साहिल सर। Hello, sir. Hi, Rohan sir. How is it going on? Good. Yeah. How are you guys? How was the lecture, guys? Good. So Very good, sir. Very nice. Okay, that's good. That's a good feedback. Tell me. Okay, so how many people over here has learned at least something? Sir, if Rohan sir, if possible, can you just close the slide share? Sure, Sharing sure. of the slide. Just a sec. Perfect. So guys, one thing is in terms of whatever the objectives that we had set, okay, of transition of our thought process, understanding new approaches towards basic things, revising our basics, making sure that we are working on our basics strongly. Correct? Are these objectives met in the lecture? Yes or no? In the chat box, guys, yes or no? Am I audible to everyone? Yes, sir. Okay, perfect. A lot of people saying yes. ठीक है, तो ये मतलब तो you guys are understanding, right? The objective is this. We are just not here to mug up stuff, get marks, nothing. Not. See, our objective is not a short-term objective. Understand, when you guys are spending time with people from the elite B schools, when people who are actually having experience working with top multinational companies of the country, correct? When you are interacting with these people, the entire overall objective is to learn best from them, understand that thought process about
How do they look at questions? See, it's not only questions that is going to matter. ये इनसे तुम्हें thought process approaches सीख के you can apply in a real life situations also. There will be a lot of scenarios where you might play a role of decision making, correct? So my entire objective is you learn from these elite faculties about how do they look at questions, how do they talk, how do they answer all the queries. So ये सारे approaches तुम्हें सीखने उनसे. Concept सीखना, yes, concepts is by default. See, in India, scoring marks is extremely important. तुम्हारे में कितना भी टैलेंट हो, तुम्हारा टैलेंट एक स्टेज पे रिकॉग्नाइज होता है, बट इंडिया में नंबर लाने बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली फोकस्ड. ठीक है, फोकस रखना है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी हैव टू एंश्योर दैट वी आर लर्निंग एवरी डे न्यू स्टफ. These techniques which Rohan sir has taught you, these are going to be extremely helpful in your corporate days. तुम्हें कोई भी कंपनी में जाओगे, तुम्हें एंट्रेंस में ये एग्जाम देनी है, यही नंबर से सॉल्व करने हैं, बोर्ड मास रूल के क्वेश्चंस आते हैं. तुम बैंकिंग के एग्जाम देने जाओ, बोर्ड मास के क्वेश्चन आते हैं. तुम सीईटी का एग्जाम देने जाओ, 5 क्वेश्चन सीईटी में बोर्ड मास के आते हैं. These things might seem simple. अब क्या होता है, people who do not practice this board mass, ठीक है यार, ऐसा लगता है कि मैंने स्कूल में ये पढ़ा है, that is fine, I will manage it. Correct. So in that manage वाला scenario ना, when it actually comes in the paper, that is the time when you actually fluctuate कि यार इसमें ये भी सोच होता था क्या, ये भी हो सकता है. Correct. You being an Indian student, we always have a mentality of doubting ourselves more. Correct, yeah, guys? Yes or no? हमें खुद के डिसीजंस पे काफी डाउट आता है, हाँ कि ना? Yes or no? Others, guys? Correct. Like a lot of people saying yes many times, right? So that is the reason what, you know, these all approaches and all ना, we at Edvicon believe of teaching all these approaches in the first go. क्यों हम लोग पहले से पढ़ाते हैं? See, being Indian students, what we do, you know, आज मैंने एग्जाम दी, ठीक है, मैं एग्जाम में बैठा हूँ. अगर मेरे को किसी ने पूरा सिलेबस पढ़ाया है, ठीक है, एंड आज रोहन सर ने जो मैं तुम्हें कैलकुलेशन टेक्निक सिखाया है ना, वो मैंने पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद सिखाया मैंने, ठीक है. I teach it afterwards. What is going to happen, you know, in the examination when you sit, right, you will solve the method through the shortcut which I have taught you. Okay, what will happen again in the end, you will solve it through the long traditional method. Why? यार मन को थोड़ा शांति मिलना चाहिए ना, आंसर मैच हो रहा है कि नहीं. करेक्ट, वी डू दैट. किसने किया ये एग्जाम में? पहले तुम्हें शॉर्टकट सिखाया, बट फिर भी तुमने तुम्हारे ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व किया है, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आंसर सेम है कि नहीं. किया है हमने बहुत बार ये चीज. करेक्ट, ऐसी लॉट ऑफ पीपल. तो व्हाई? बिकॉज मुझे पता है ये इंडियन सोसाइटी का एटीट्यूड है, ठीक है. सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. वी नीड टू गेट चेंजेस इन दैट. That is the reason what I'm doing. I'm teaching you shortcuts and techniques and smart calculations from day one of the lecture, so that when you sit for the lecture, it becomes your own method rather than anyone else. Correct. So that is how we are going to grow. Correct. That is how we are going to prosper. That is how we are going to attain success. Success for everyone is going to be different. Someone might use this training, this aptitude for the corporate training. You get into corporates, I'll be the most happiest person. Someone might use this for entrance exams of CAT. You get into B school, I'll be the most happiest person. My objective is to bring change in your life in a very structured manner, telling you that this is the way we are going to do it. And trust me, out of the 50 students who are sitting with me today, 10 people are going to experience results. Why? Because they're going to actually follow what I'm going to tell. So I want these 10 people ka number to go up to 30, 40, get the maximum out of you. When you're interacting with such people, get the best out of you, learn the most and get the best results. Ha ki na? Yes, guys, I'll keep it very interactive. I'll make sure that you're typing it 20 times with me. Great. So guys, it was an amazing time with you guys. Okay, tomorrow again at 11 to 1 we'll have Rohan sir. He'll start with basic chapters called as averages, then he'll cover percentages, profit and loss. ये basic chapter में ना वो लोग तुम्हें एक approach सिखाएंगे. That approach is going to be extremely important. ठीक है guys, good to go. Rohan sir, anything to wind up? No, sir, you have covered it all. Thanks guys, thanks a lot.
Thank you guys. Thank you guys. We'll catch up tomorrow. And one thing, what I want is tomorrow I want the number to be double. So it is your responsibility to tell other students. When we have good content, when we have good faculties, why not learn? Correct? Perfect. And one more request, guys, try to come on time, please, so that we can start on the lecture on time. Thanks. Perfect. Yes. Perfect. Chalo guys, nice talking to you. Rohan sir will catch you up tomorrow. I will be having people from Google next weekend with us. So I see you by then. Take care guys. Bye bye.